everyone. In today's video lecture, we are going to finish the character sketches of the novel Kanthapura by Raja Rao. And so we are going to do 4 characters. Not do them in detail because they are small characters. And we will just write a few things about them. और मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जैसा कि हमने पहले के वीडियोस में किया, हम ये जो 4 कैरेक्टर्स, छोटे छोटे 4 कैरेक्टर्स आज इस वीडियो लेक्चर में करेंगे, उन्हें अंत में मैं हिंदी में भी एक बार समझाऊंगी फॉर योर सिंपलर अंडरस्टैंडिंग. सो आई एम गोइंग टू बिगिन विथ द कैरेक्टर ऑफ शास्त्री. He is a character of a poet, a singer, and a performer. Poet, singer, and performer. And in the novel, we have already talked of how Hari Katha and different types of Katha are performed in Kanthapura for the entertainment of the people. That is one thing. Number 2, for giving spiritual lessons. So entertainment, definitely one thing. People enjoy when they come to see the performance of Hari Katha and also performance of Sastry in this character. Secondly, it is for the purpose of giving religious lessons and stories. So even with Hari Katha and also with the performance of Sastry, some story or some lesson which is related to religion is given. And then number 3, the Gandhian philosophy. And it is related to the freedom struggle also. So these 3 purposes are solved when we see that when Sastry performs and also when Jai Ramachar, he gives his Hari Katha performance in the village. So as I had written before that he is a poet, singer and performer. Regarding Sastry, we know that he is a middle-aged man who performs and dances and sings holy songs, and he has bells on his ankles and symbols on his hands, in his hands. बेल्स, घंटियाँ, सिम्बल्स यानी मंजीरे. तो उसने अपने पैरों में घंटियाँ बांधी हैं और उसके हाथों में मंजीरे हैं because he sings and dances and performs holy songs. He has a patron. Patron means somebody who sponsors him or somebody who looks after him. In the Maharaja of Mysore, he always wears a shawl that was gifted to him by the Maharaja. He sings and performs the story of Rama and Sita. This is a special story that he has written for the Maharaja of Mysore, and wherever he goes, he performs this story. He sings about Ram and Sita, and also he adds the Gandhian philosophy in his
songs. So he not only sings about Ram and Sita, but he also sings about Mahatma Gandhi, and he sings about the freedom struggle and what Gandhi says about equality and removal of caste system. These are the things that he sings about. So in this way, Sastry, even though he is a religious performer, he is also a revolutionary and a fighter for India's freedom struggle. Now I will just repeat the character of Sastry in Hindi. वो एक कवि है, एक गीतकार है, गाना भी गाता है, और साथ ही साथ वो परफॉर्मर है, यानी नाच नाच कर, गा कर वो अपनी परफॉर्मेंस देता है। और जैसा कि हमने जय रामाचार्य जो कि हरि कथा सुनाते थे, उनके बारे में भी कहा था कि ये हरि कथा हो गई या फिर शास्त्री के जो भजन और गाने हो गए, वो ना सिर्फ लोगों को एंटरटेन करते हैं, बल्कि वो धर्म की कोई कहानियाँ या लेक्चर भी साथ के साथ देते हैं, लेसन देते हैं लोगों को, जो कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है। और तीसरा, वो कहीं ना कहीं अपने गानों और भजनों के द्वारा वो गांधी की फ़िलॉसफ़ी और भारत की आज़ादी की लड़ाई के बारे में भी लोगों को बताते हैं। तो लोग भगवान के गाने सुनते सुनते कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी की जंग में अपनी कंट्रीब्यूशन देने के लिए भी उत्साहित हो जाते हैं। और उनके बारे में हमने ये लिखा कि वो एक मिडिल एज व्यक्ति है। मिडिल एज का मतलब है कि 40 से 50-55 की उम्र है उनकी। और वो जब परफॉर्म करते हैं, वो डांस करते हैं, गाते हैं, तो वो भगवान के भजन सुनाते हैं। उनके पैरों में घंटियां बांध रखी हैं, उनके हाथों में मंजीरें हैं। इस प्रकार वो अपने म्यूज़िक के ज़रिए बहुत ही सुंदर प्रदर्शन करते हैं। फिर हमने ये जाना कि जो मैसूर के महाराजा हैं, वो उनकी छत्र छाया में वो एक कवि की तरह रहते हैं, और उनकी महाराजा की दी हुई शॉल वो हमेशा पहनते हैं। तो इस तरह से वो लोगों को ये बताते हैं कि किस तरह महाराजा के शरण में वो हैं, और महाराजा ही उन्हें मतलब पेट्रन का मतलब होता है कि उनका ख्याल रखना, पैसे देना, एक तरह से उनके गुज़र बसर का साधन जो है वो महाराजा ही प्रोवाइड करते हैं। वो उनकी स्पेशलिटी है राम और सीता के भजन सुनाना, उनकी कहानी सुनाना, लेकिन साथ ही साथ वो गांधी की फ़िलॉसफ़ी और भारत की आज़ादी की लड़ाई के बारे में भी गाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो दिस इज़ द कैरेक्टर ऑफ शास्त्री दैट वी हैव डन टुडे। नाउ continuing, we are going to do the second character, and the second character is that of Buddhakhan. Buddhakhan is a different character now. So about Buddhakhan, we know that he is a Muslim policeman who is described as short and fat and bearded, and he is a very tyrant, dominating person who is very angry all the time, ill-tempered, and very violent behavior. Violent means he just beats up people, and he really tortures them, and he is like a tyrant and very dominating. About Buddhakhan, we also know that he is against Gandhi and the people who follow the Mahatma or his philosophy, because he is a policeman, so he is like a representative of the government, and that is why he is really against Gandhi and those who follow Mahatma Gandhi. So he is also
against Murthy. Obviously, he is against Murthy because Murthy is the biggest follower of Mahatma Gandhi. He is also like an enemy of the British government. So he is against Murthy and also um, beats and attacks him. That is why the people become angry with him. They are against him and drive him away from the village. And then he goes and stays in the coffee estate. So there is a Skeffington coffee estate. So when Bade Khan is driven away from the village, he goes and lives in the coffee estate. And the last thing that we know about Bade Khan is that Achakka describes him like an animal. Even though we have seen in the novel that Murthy tries to change his behavior, Murthy tries to convert him into Gandhian philosophy and ideals, he will never change and he remains the enemy of Murthy. So just going back to the character of बड़े खान, और मैं इसे हिंदी में एक बार आपके लिए समझा रही हूँ. बड़े खान का कैरेक्टर है एक मुस्लिम पुलिस वाले का, जो कि जिसे कि फिज़िकली डिस्क्राइब किया जाता है. वो देखने में कैसा है, हाइट छोटी है, मोटा है, उसकी दाढ़ी है और उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही बुरा है. टायरेंट का मतलब एक जुल्मी आदमी के जैसा उसका बिहेवियर है. वो लोगों को बहुत मारता है, बहुत ही गुस्से वाला है. इल टेम्पर्ड का मतलब है उसे बहुत चिड़चिड़ा बिहेवियर है, बहुत गुस्से में आ जाता है जल्दी ही. और फिर उसके बाद वो हाथ उठाता है, वायलेंस करता है, लोगों पे अत्याचार करता है. वो गांधी के खिलाफ है क्योंकि पुलिस वाला है, तो एक तरह से वो गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहा है, तो गांधी के खिलाफ है. और साथ ही साथ जो लोग गांधी को फॉलो करते हैं उनके खिलाफ भी वो है. और ऑब्वियसली फिर वो मूर्ति के भी खिलाफ है. और हमने इस नॉवल में देखते हैं कि वो मूर्ति पे अटैक करता है और उसे मारता है. ऐसा करने पर लोग, कांथापुरा के लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और उसे गांव से भगा दिया जाता है. और फिर वो स्केफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट में जाकर रहने लगता है. और आखिरी चीज़ जो हमने उसके बारे में ये की थी कि अचक्का, जो कि इस नॉवल की नैरेटर है और सबके बारे में कुछ ना कुछ वो कहती ही है, वो बड़े खान को एक जानवर की तरह डिस्क्राइब करती है. उसका बिहेवियर ऐसा है जैसा कि कोई जानवर होता है. मूर्ति उसे कई बार बदलने की कोशिश भी करता है कि वो समझ जाए कि क्योंकि वो एक इंडियन है तो उसे महात्मा गांधी का साथ देना चाहिए. पर ऐसा नहीं होता, बल्कि वो गांव वालों का दुश्मन ही बना रहता है. Now we are going to do the third character, and the third character is that of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, as I had told you about another character, he is somebody who does not appear directly in the story. Only his name is repeated many times, just like the character that we had done earlier also. His name is repeated many times, people follow him, talk about him, he is very important. Definitely he is very important, but he does not appear directly in the story. The villagers worship Gandhi and Murthy brings Gandhi's philosophy to the village.
The people did not know anything about Mahatma Gandhi. Murthy brought his teachings to the village, and then the villagers started worshipping Gandhi. They thought that he was like the reincarnation of Shiva. So they worshipped him like Lord Shiva. Mahatma Gandhi was the leader of India's independence movement. In his teachings he taught non-violence, satyagraha, about peaceful marches against the British, fasting. All these things were part of Gandhian philosophy, and of course he promoted khadi, which was Indian cloth. So because it was Indian, Mahatma Gandhi insisted that we should wear Indian, we should just give away anything that was foreign. And with all these things, he thought that we could bring about Swaraj. What is the meaning of Swaraj? Swaraj means self-rule, our own rule, rule of our own people. We should not live under the rule of the British. This is what Mahatma Gandhi thought. And if we were to follow all these things, then ultimately we will get Swaraj or self-rule. So the people of Kanthapura believed that Murthy was their own Gandhi. He was like a small figure of Gandhi in their own village, and they followed Murthy just like they would follow Mahatma Gandhi. And Mahatma Gandhi was also against caste system. He was against untouchability, and he wanted the improvement in the stature of women, especially widows, in Indian society. In Kanthapura, we have read about widow characters like Rachna and Rangamma. These are the characters which are they, first of all, people don't accept them because they are widows, but then people actually start believing in their skill, their worth, and they emerge as leaders. So this is only because of Mahatma Gandhi's philosophy. So then that is why Mahatma Gandhi is a very important character, because the people of Kanthapura actually do whatever Mahatma Gandhi teaches. And now in very short I am going to tell you this character in Hindi. महात्मा गांधी का किरदार जो है वो एक्चुअली नॉवल में कभी नहीं आता है, लेकिन उनके बारे में हम कई बार सुनते भी हैं, और वो बहुत ही असरदार कैरेक्टर हैं जो कांथापुरा के एक्चुअल लोग हैं उनके ऊपर उनका काफ़ी असर है। गांव वाले एक तरह से उन्हें शिव की तरह पूजते ही हैं, और वो मूर्ति है जो कि गांधी की फ़िलॉसफ़ी को गांव में लेकर आया। जब वो शहर से वापस आया तो उसने लोगों को गांधी के बारे में बताना शुरू किया कि गांधी जो है वो एक लीडर हैं जो कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में बहुत योगदान दे रहे हैं, और मूर्ति की वजह से लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू किया। गांधी की फ़िलॉसफ़ी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा, सत्याग्रह और शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालना। तो मूर्ति भी यही करता था, लोगों को शांतिपूर्ण मार्च में लेकर जाता था
अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। जहाँ भी उसको लगता था कि आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, वहाँ लोग चुपचाप मूर्ति के पीछे मार्च करते हुए चलते थे। फास्टिंग, मूर्ति खुद कई कई दिन के उपवास रखता था, जैसा कि महात्मा गांधी बताते थे। और खादी का उपयोग करना, जो कि अपने हाथों से बुना हुआ कपड़ा है और स्वदेशी कपड़ा है, और विदेशी कपड़े को वो कहते थे कि छोड़ दें, विदेशी चीज़ों को छोड़ दें। अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमें स्वराज मिलेगा, यानी हमारा खुद का राज, ऐसा गांधी कहते थे। मूर्ति वो सब कुछ करता था जो महात्मा गांधी कहते थे, और कांथापुरा के लोग जो थे वो मूर्ति को अपना खुद का एक गांधी मानते थे। महात्मा गांधी कास्ट सिस्टम के भी खिलाफ थे, छुआछूत में भी विश्वास रखने के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि समाज का सुधार हो, स्पेशली जो औरतें हैं उनका जो समाज में स्टेचर है, यानी कि जगह है, वो बदले, उसमें सुधार हो। स्पेशली विडोज़, जिनके साथ की बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, उनको न्याय मिले और जो हमारा समाज है वो सुधर जाए। And now the fourth and the last character, it's a very minor character, but I just wish to touch upon her. This is the character of Kamalama. She is a 31-year-old woman who is the sister of Rangama and mother of Rachna. Rangamma and Rachna both are widows, and Rachna is a child widow. We have done her character also. We have done the character of Rangamma also. She is a widow, but she is very well read, educated, and she is the follower of Mahatma Gandhi, and slowly Rachna also becomes the follower of Mahatma Gandhi, and she is a child widow. But Kamalamma, who is the sister of Rangamma and mother of Rachna, she is a very different character. She is very strict and rigid about caste system. She rejects the teachings of Mahatma Gandhi, even though her own sister and daughter follow Gandhi and they are very modern. So both Rachna and Rangamma are modern and they follow Mahatma Gandhi. But Kamalamma, who is the mother of Rachna, she is a very strict woman. She is rigid about the caste system. She does not believe anything that Murthy says. She does not believe in any teachings of Mahatma Gandhi. So this is the character of Kamalamma, and this is our last character. With this we finish off the list of characters. तो एक बार हिंदी में इसे छोटा सा बता देती हूँ कि कमलम्मा एक 31 साल की महिला है, जो कि रंगम्मा की बहन है और रचना की मदर है। रचना वो कैरेक्टर जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, वो एक बाल विधवा है। बहुत छोटी उम्र में ही वो विधवा हो गई थी और उसको कुछ उसके बारे में याद भी नहीं है, लेकिन सोसाइटी उसे बुरी तरह से ट्रीट करती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक विधवा है। रंगम्मा भी एक विधवा है जो कि कमलम्मा की सिस्टर है, लेकिन वो बहुत मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है। उसके विचार रंगम्मा से काफ़ी उलट हैं, क्योंकि ये दोनों महात्मा गांधी को फॉलो करती हैं और मूर्ति का साथ देती हैं। वो फ्रीडम स्ट्रगल में लीडर बनती हैं, ये दोनों ही। लेकिन कमलम्मा जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, रिजिड है, का मतलब है कि वो इस अपने व्यवहार में काफ़ी अडिग हैं, कि वो कास्ट सिस्टम में बिलीव करती हैं, तो फिर वो और कोई भी बात सुनती नहीं है। उनके विचार से कास्ट सिस्टम है और विधवाओं का जो स्थान है वो ऐसा ही है, और इसीलिए
वो महात्मा गांधी की टीचिंग्स को बहुत रिजेक्ट कर देती हैं, सिरे से खारिज कर देती हैं, नहीं मानती, जबकि उनकी अपनी बहन और उनकी बेटी दोनों ही महात्मा गांधी को फॉलो करती हैं। इसके साथ हमारे कैरेक्टर्स की लिस्ट ख़त्म हो जाती है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर्स स्टार्ट करूँगी। तो इसमें कुल 19 चैप्टर हैं जो हमने करने हैं, जिनकी समरी हम धीरे धीरे वीडियो लेक्चर्स के द्वारा इसी तरह से करेंगे। Thank you very much.